So let's start from the beginning itself. मैं घाटकोपर में पैदा हुई थी और I've lived there for 24 years. We just moved out. Now I live wherever I live, and I've really enjoyed my childhood. Yeah, it's been from and whatever we had at that time. Also, I think my parents made sure that we're really happy no matter what. Dad, mom कैसे थे तब? My dad and mom, they've had a very. They started from ground, bro. Like literally ground. I mean, they had nothing. My dad had nothing, and now where he is, I feel like it's like a miracle. I mean, what do you say? The black horse of the family, you know. So I Dark think horse. he's just that dark horse of the family, and it's just insane. So I've seen him grow. Like he had a motorbike that everybody in the family used to use, and then he upgraded to Maruti 800. Oh, fuck. And then he got a Zen. After that he got a S-Team. Then Honda City उन्होंने ली थी ऐसा सेकंड हैंड ब्लू कलर की, किसी ने मॉडिफाई करी थी और बहुत अच्छी लगती थी तब. लाइक इट वाज इनसेन, इट वाज अ कूल कार. उसके ऐसे उठते रेज थे. था Honda City का तो एक टाइम पे. हाँ, रेज था. तो उसके ऐसे उठते, जो डोर होता है नॉर्मली नहीं खुलता था, ऊपर जाता था, तो वी वुड गेट रियली एक्साइटेड, एंड सो ही हैड दैट फॉर अ व्हाइल. देन ही गॉट Skoda, देन Captiva, then I think he got his first, and after that actually I don't remember, but this I remember. He got Mercedes, and then he got now he has a Maserati. Wow. So it's like that's insane. So from 800 to a Maserati. Yeah. I like it. Mom has been a housewife. I was the only child in the house out of all the cousins that my mother used to wake up. She's like, Dadra, upar chad karo, you know, go for your proper workout. Proper workout she would make me do. Also because at that time I had started to get PCOD, and I had started to gain a lot of weight. It does that to you. Yeah, So, I know. and your skin starts to break out, and Yeah. you start looking a different way. So I think it's a lifestyle change had to happen for it to sort of not aggravate, but it still did regardless. We tried to curb it as much as we could. Difficult but task. for 10 years, 13 years, I sort of battled with it. And then, of course, your hormones calm down. So anyway, that's a different story. I think she did. Yeah? She did. When did you realize that? She told me already. She actually, at one point, she said that I'm going to teach you everything, and then you pick something. Don't sit at home. Because I did, and I don't want you to do the same. जब कुछ नहीं होता है ना लाइफ में, और जब यू सी योर पेरेंट्स स्ट्रगल सो मच, इट्स जस्ट दैट आई थिंक वो अपने अंदर भी आ जाता है कि यार वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मैं कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ. एंड मेरे दिमाग में ऑलवेज ये होता था कि I always wanted to add another zero to my dad's wealth, whatever he makes. क्यों? Because I've seen him work so hard, yeah, and I wanted to be like him. After 12, मेरे लिए यार, मैं अपने पापा को रोज़ मैं इतना मेहनत करते देखती थी ना. वो कुछ दिन घर पे मतलब आई थिंक 2-3 घंटे के लिए आते थे खाली. और जब मैं बड़ी हो रही थी, ऐसा कोई हाउ डू आई एक्सप्लेन, पेरेंट्स का भी था. एंड मोस्टली मैं जब बड़ी हो रही थी ना, तो आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक द अदर गर्ल्स look when they're a certain age. I looked quite older. Okay. And I had gained a lot of weight. And it's just that फिर वो हो जाता ना यार कि how do I get my life back on track? How do I make people really understand me and really feel like, oh, you know what, she's the real deal. To the 10 to 15 बनी आपके हिसाब से? She was almost similar, yeah. Similar? Yeah. No change. No change. And 10 to 15, now we're getting into 15 wala. So 10 to 15 or 15. 10 to 15, I feel. At 12, actually, I'll tell you, I got this. I still remember that one time that I went for a run. Because I was really frustrated of people really calling me fat. And I'd started to get this, I went on this diet, and I used to go for a run every day to lose weight. और वो मतलब आपको हर कोई बताएगा जो भी इस चीज़ से डील किया उन्होंने लाइफ में, दिल टेल यू. भागो.
हाँ भागो और कोई वो नहीं है, भागो. So at that time ना यार मैं यही सोचती थी कि I remember that day when I went for that run on that particular day, that I'm going to do something, I'm going to make it. I don't know what, but from there I think my life really changed. Then I started to participate in every single thing that I could. तो ट्रिगर वाज एक्सटर्नल पीपल जो आपको बोलते थे कि आप फैट हो Yeah, and that's not wrong, bro, because I feel like that society, अभी उनको मैं change नहीं कर सकती, और they contributed to the good, so it's not a sob story. I feel like it's something Yeah, that, you don't look like sad. And yeah, all, like, and they made me strong, man. Thank you. haters gonna hate. Yeah. Nice. यार Take तुम your अपने time. बारे में कुछ बताओ, मैं बोलती ही जाती हूँ. मजा आ रहा ये थेरेपी सेशन हो गया है bro. है. नहीं. उल्टी कर रही हूँ मैं सिर्फ. I did my first playback with Rahat Fateh Ali Khan Sahab for Ishtihar. It was Diljit Dosanjh and Sonakshi Sinha. So their film, but उधर से कुछ हुआ नहीं. Still the exposure. Yeah, would be- काफी बड़ा एक्सपोजर था. हाँ. और एक वर्जन भी गाया था जो यूट्यूब पे डाला था, एंड आई थिंक दैट टाइम आई फर्स्ट मेट दिलजीत एंड ही वाज जस्ट लाइक insanely sweet. Like I As an really experience. liked how very good. Yeah, he started like at that time Twitter pe I had put it, and I remember him liking it, that thing, and then him sending me like a not a message, but at that time he would just make sure that, oh, I'm appreciated. And then of course he unfollowed everybody. So yeah. Oops. But today also I feel like if I sort of he added me on this one Instagram live, and I think he's always been very sweet and very appreciative. So I was shooting for this film Kahan Shuru Kahan Khatam in Bhopal. And I just, because I really like him, yeah. I mean, who doesn't? So I went on one of his lives, and then I didn't say anything. अच्छा very recent है. हाँ, मतलब 1 साल हो गया. हाँ. हम शूटिंग कर रहे थे तब 23. हाँ. तो मैं गई, मैंने सिर्फ एक हाथ डाला था, और इतने सारे लोग देख रहे हैं लाइव पे, क्या ही उनको देखेगा. So उन्होंने देख लिया, and he's added me. I said what? मैं बस नाइट ड्रेस में बैठी हूँ मेरे इसमें. So I couldn't be like I'll ignore it or whatever. So I added myself, and then he was making a smoothie. So he said, "Papa कैसे हैं?" बहुत अच्छे हैं. Because my dad, of course, he worked in T-Series for the longest time. And anyway, that's a different story. I shall come to it. But he asked me, "Papa कैसे हैं?" I said, "Very, very good. बहुत अच्छे हैं." Sir, मुझे आपकी smoothie चाहिए. बहुत पर्पल लग रही है. मैं क्या बोल रही है? चुप हो जा. And then he said, हम आपके गाने सुनते हैं, हमको बहुत अच्छे लगते हैं. We really. So I said, what? I couldn't believe it, and I was just, I was just totally in awe for like those 5-7 minutes that I was on it. And जाते also I said, please, ये smoothie आप मुझे भेज देना. And then again I was like, Dhwani, shut up. But what do you do? What did he say? What? What did he reply to that? He's like, get out. No, but I thoroughly enjoyed myself, bro. Yeah. But I got embarrassed, but I was like, it's a cute moment. Whatever. ठीक है, back to 1821. Yeah. गाने वाने. Then I did Dilbar. That was the first big breakish of sorts. Yeah, but a lot of people thought that it was only sung by Neha. Then people started to know eventually that I've sung a little bit of it. The starting bit is my voice. Yeah. वो वाला process. I had gotten in touch with Tanishq Bagchi at that time, and I did. He called me actually to sort of do this Audition. as a scratch, sort of, So I did it, and first he said, "तुमने दिलबर सुना है?" I said, "नहीं," because पहले आया था. So he said, सुन के आना. So I said, okay. So then I went and heard it, and I came back to him, and then he said, हाँ ये गा दे type. And he was very gracious about it, bro. Like I just feel to have that opportunity also was I think it was fantastic for me, because he's so good. And that happened. Then there was a gap after Dilbar. People started to know me a little bit. Then I'd like to think so, because my Instagram followers started increasing a little. कितने थे तब?
13,000 से 16,000 हो गए थे 3,000 बढ़ गए थे काफी तो ज्यादा। वो सिक नेक्स्ट लेवल Yeah. एनीवे मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हूँ बहुत बड़ा यार। नंबर है 2018 में 13 से 16 Yeah, मतलब इन्फ्लुएंसर। लाइक हाँ Legit. कुछ तो हो ही जाएगा। हाँ। और उसके बीच ना इशारे तेरे कर रहे थे गुरु रंधावा और टी सीरीज, तो वहाँ पे समहाउ आई वॉज इन द स्टूडियो विद अभिजीत वगानी एंड आई वेंट देयर। तो मैं काफ़ी मेरे को जिम करना पड़ता था तो मैं ऐसे स्वेटी कपड़ों में चली गई थी एंड देयर एंटर्स गुरु रंधावा एंड अगेन आई मेड अ फूल आउट ऑफ माई सेल्फ सो देयर आई एम एंड देन वी आर डूइंग दिस एंड आई वाज सो यंग एट दैट टाइम ब्रो, लाइक आई हैड नो आइडिया ओनली व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, व्हाट वर्कड फॉर मी। लाइक जो भी सिंगर सुन रहे हैं इसको, या जो भी इन जनरल फंडामेंटल आपके हिसाब से क्या चला जो आपने किया? हाउ डू आई एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स? आई फील लाइक कुछ ऐसा होना चाहिए आप में जो एक्स फैक्टर जो लोगों से अलग हो, और वो जल्दी पता नहीं चलता। यू जस्ट हैव टू कॉन्स्टेंटली बी एट योर क्राफ्ट फॉर यू टू, because something you will bring to the screen that you also can't point out is what I feel, and something you will bring to the voice में एक चीज़ होती है that at least don't sound like someone else. And yeah, that I mean that identity I feel like is very important to have if I had to put it in words. And for me what worked was, I think I sort of had this voice which had a western element, and it's kind of sexy and it's also sweet at the same time. Yeah, it is sweet. So Yeah. it is because it's quite different in Dilbar and Vaste. Vaste is one of the, Yeah. I love it. Yeah. I was just telling them also before you came that Vaste is Yeah. So वही तो I was also in college when it got made. Yeah. क्या बात करें, college में सुनते थे हम. True. एक ही साल बड़ी हूँ मैं तुमसे, शर्म करो. कॉलेज में मत सुनते थे हम. So वो हुआ यार. फिर इशारे तेरे के बाद डांस करने जाती थी, गाना सीखने जाती थी, पूरा दिन वैसे निकल जाता था और कॉलेज भी जाती थी. तो सुबह 6 बजे उठ के ये सारा करती थी. एंड मेरे दिमाग में ना तब ये आइडिया आ गया था कि यार मुझे एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनना है. वी डिड ले जा रे विच रिलीज इन 2018. Little did I know, it blew up everywhere. Then we did, right after that we did, so usi dauran we shot one more music video. It's called Main Teri Hoon. That's also about like 100 million views on YouTube, which was insane. And after Le Ja Re, they sort of signed me. Then I went to T Series after Le Ja Re. Afterward, we also did Vaste with them. Vaste was 19. The catch with early success is also that you then have no time to make mistakes. Because then if you make mistakes, people just write you off. one puni wonder बोलने लग जाते हैं. Yeah. So I really tried my level best. Then afterward, thankfully, Psycho Saiyan also happened, which was in Saho. So I sang it in like 4 languages. And one of them was with Anirudh also. So that happened. And उसके बाद काफ़ी गाने किए और फिर तो चल ही रहा है. वास्ते में क्या हुआ था? वास्ते की जर्नी कैसी थी? वास्ते के टाइम में एक्चुअली बहुत जब गाया था तो बहुत बीमार पड़ गई थी. So वो जो then Tanishq is like, I love this voice. So I was like, this is like Phoebe from Friends. I was like, smelly cat, sexy wala. I was like, listen. So he's like, this Wow, is I was watching that crazy. episode yesterday. Yeah, see? That is insane. So that happened. और फिर तब actually I was shooting for Le Ja Re when I dubbed Vaste. अच्छा. So then we decided, oh, this is sick. So we released that. And Papa was very actually instrumental in deciding what is right. What are the top 3? There's a lot in your head which is going wrong parallelly. You're overthinking. You're thinking ये आवाज है कल चला जाएगा वगैरह वगैरह. And I do overthink a lot, yeah. That's for sure. But I feel like I always move on to the next. That's something that a trait that I have. मैं भूल जाऊंगी जो हुआ. आगे बढ़ती रहूंगी and अपना करती रहूंगी. पर ना I think बीच में क्या हो गया था कि I just didn't feel like it, yeah.
I just then took some time to sort of understand what is really happening with me. So I think it was a year and a half. कौन सा टाइम है ये? 2020 22. पोस्ट कोविड. हाँ. क्या हो मैं रहा था? गाने वैसे कर रही थी पर मेरा ऐसा मन नहीं हो रहा था कि यार मैं जाऊं किसी से बातें करूं या ब्लैंकनेस, एम्प्टीनेस क्या काफी था? एम्प्टीनेस, Emptiness. काफी ब्लैंकनेस, काफी ऐसा लग रहा था कि क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ ऐसा? हाँ, like, and most importantly I feel like my head had become very negative, so I wasn't finding joy in anything at that point. So I don't know if you call it depression, but it just hit me and it went. But I was in this phase for quite some time, for a year. I still was working, but then again, as like I said, very ऐसा blah, not really. फोन no उठाने का मन sense नहीं of कर रहा है, direction, लोगों से बात like करने का लोगों मन से नहीं बात करने का मन नहीं कर रहा है, कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है. तो वो हुआ. पर उसके बाद आई फील आई बाउंस बैक वेरी फास्ट लाइक दैट. बट आई फील लाइक ये होता है यार, आर्टिस्ट के साथ होता है. फील कभी कभी वो Enter सेंस ऑफ कैसे हुआ? डायरेक्शन. How did you enter this space? मतलब No, I negative had no flow. idea, bro. It just Automatically happened. Then I started to work again. 2023, I decided I want to do a film because I wanted to add another feather to my cap and I wanted to upscale myself like I always have wanted to. Yeah, I'm seeing And that just to pattern. contribute to the idea of just being a complete artist and a pop artist, which I think I did, and it released, and then the first day we sold about 1 lakh tickets. I saw that which video is- with your dad. Yeah, That was nice. it was great for us. Yeah, we did I mean, Friday was like a crore plus. From a learning angle, Correct. थोड़े सवाल पूछूंगा मैं. एक चीज़ मैंने अपनी में देखी है. You used to do acting and dancing and this and that, and then भी acting workshop की बात करी. अब acting में घुसना है from singing because अब singing कर लिया XYZ. नहीं करा नहीं है यार. एक लेवल तक किया है, ये भी करना बट है. पैरेलली करना है क्योंकि अभी I'll just sorry I'm cutting you on Go on, this, go on, but go on. it's just that I wanna ये जब मैं बोल रही हूँ ना that I want to do acting now, मेरे को पैरेलली करना है. तो अभी मैंने एक पिक्चर करी, अब मैं फिर से जाऊँगी म्यूजिक करूँगी, सिंगल रिलीज करूँगी, क्योंकि यार वैसे तो लोग उसी के बेसिस पे लोग मुझे जानते हैं और मेरा कोई मन नहीं है कि मैं म्यूजिक छोड़ूँ. मैं नहीं छोड़ूंगी कभी भी नहीं. And I feel like musicians anyway have a longer life career span than actors. So, and this is just another. It's a part of my package. Music is the main crux of it, dude. तो again coming back to the OG question, Yeah. एक trait जो मुझे दिख रही है common is that no matter what's happening, बुरा अच्छा, you keep moving. 100%. आगे बढ़ते रहो, कुछ आगे ना कुछ बढ़ते करते रहो. That's one of the Correct. key successes का reason आपका. और दो बताओ. आगे बढ़ते रहो, पॉजिटिव आउटलुक रखो लाइफ में, होप नहीं छोड़ना. I don't. So even if I'm getting into a space where I'm just like, okay, fuck, sorry, I इसमें can't. क्या है? You can't? You can swear? Oh. लोग तो पता नहीं क्या क्या बोल के जा चुके हैं. Okay, कि मैं यार ये नहीं कर पाऊंगी. तो वो ना already you're setting yourself up for failure. So I Limiting belief. make sure that I don't do that. I'm very delulu like that in my head. Like In a positive way. in a positive अच्छी way. बात है. Like I make sure that I've dreamt it, seen it, and laughed about it, cried about it. Like I have this thing where I've never said it before. Oh my god. So I drive in the car and I put on music and it's mostly the unreleased one. And I cry. And I see things and I cry. Like in a good way. And I really feel, and I read it in a book, that when you add emotions to your thoughts, they really manifest themselves. I'm not crazy, guys. But a lot of people do a lot of things, okay? नहीं, काफी अच्छी चीज़ है. Like I was doing an expedition recently. अभी मैं एक हफ्ता जॉर्डन में गया हुआ था, तो लगा बिजनेस वर्क थी क्योंकि मिडल ईस्ट में है, सामने इजराइल है, पीछे ईरान है. Correct. तो पहले एक दिन तो डर लगा, बट फिर देर लाइक इट्स अ सेफ कंट्री वगैरह वगैरह. वहाँ पे हमसे ये सब करवाया गया है. फ्राइडे मतलब बिल्ली सामने से कट के चले जाएगी, ऑल दैट स्टफ. नाखून रात को नहीं काटने चाहिए. वैसे ही आप अपने आप को लिमिटिंग बिलीफ बोलते हो कि आई एम नॉट गुड इनफ, मुझसे ये नहीं सकता, मुझसे वो नहीं सकता. तो उसने हमसे वो लिखवाए. क्यों? बताओ, क्यों तुमने मुझसे तो पूछ लिया है? अरे नहीं, मेरे पास अननोन एक्सपेडिशन है तो गुस्सा करेंगे, बट लिमिट बताता हूँ. यू आर ऑलरेडी एट दिस पार्ट कि आई एम नॉट गुड इनफ, यू राइट, यू आर गुड इनफ, एंड देन यू स्टार्ट अ पॉजिटिव लूप ऑफ दैट.
करेक्ट. क्राइंग तो एवरी इमोशन का एक्सट्रीम इज क्राइंग. आप बहुत खुश हो तो आप रो रहे हो, आप बहुत दुखी हो तो आप रो रहे हो, तो उसमें तो मतलब So you have to go to the extreme in your head, and वो Yeah. ऐसे gradually शुरू होता है. ऐसा नहीं है कि मैं बस गाना चला के रोने लगती हूँ. yeah. I constantly keep thinking about it, and I make scenarios, and like for example, so let me say it only while I'm this open. Yeah. So I am here. I've come for an award show. My dad is here. He's sitting right in the this, and I've gone up and I have an Oscar in my hand, and I've seen my outfit. I've seen what I exactly look like, and I've seen what my dad is wearing. It's just an example. नहीं अच्छा है. It's just something that. Yeah. So यही तो प्रॉब्लम है, आपको ट्रेन करना पड़ेगा ऐसे बनने के लिए. आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक क्यों नहीं करो यार भाई, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँच गए लोग. जस्ट इमेजिन. और ऐसे सोच सोच के ही पहुँचे हैं. आई फील लाइक इफ यू डोंट थिंक यू कैन नॉट डू. एंड माई डैड इज इन द फैमिली एग्जाम्पल ऑफ इट. अब जहाँ हम रह रहे हैं और जो हमारी लाइफ है भाई, वो तो सोच भी नहीं सकते. वो जब बड़े हो रहे थे, आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी दैट आई हैव स्टेड एंड स्लेप्ट इन अ रूम जो कि मतलब ऐसे तुम और मैं बैठे हैं ना, ये जो ऐसा है इतना सा था, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है वो. एक छोटा सा वहाँ पे टेबल फैन लगा देंगे, एक जीरो लाइट लगा देंगे, यू नो द बल्ब, और दैट्स इट. एंड चूहे हैं. ही स्लेप्ट लाइक दैट. They've seen that time. So imagine from there to today, he's like, if I, वो मेरी सोच से ही हुआ है. मैं करते चला गया. तो the most important point is कि तुम करते रहो, और जब वो opportunity आएगी ना, लोग तुमको देख लेंगे and they'll choose you. मैनिफेस्ट करते रहो, विजन करते रहो. और काम करते रहो. ऐसे सोच के कुछ नहीं होता है. ऐसे सोच के तो कुछ भी नहीं होता है. लोग नोट बना रहे, सोचूंगा मैं. वो बेचारा 0, 0, 10, 5 ऐसे बहुत आउट हुआ था. एंड आफ्टर द नेक्स्ट 4 years बहुत सक्सेस मिला विराट को. ऑफ कोर्स 2015, 16, 17, 18 में ही कम्स बैक टू इंग्लैंड. इंडिया में स्पेशली, यूएस में तो कोबी ब्रायंट ये सब काफ़ी बात करते थे. एंड देन ही हिट मल्टीपल सेंचुरीज इन दैट सीरीज, एंड वो भी मिथ ब्रेक कर दिया उसने. फर्स्ट इज कीप मूविंग, सेकंड इज मैनिफेस्ट एंड गो इंटेंसली डीप विद दैट. तो एक्टिंग में भी हेल्प हुई होगी फिर तो, बिकॉज एक्टिंग में भी यूज़ करते ही ना, वर्कशॉप इनसाइड आउट, इनसाइड इन. Practice, like in general. Practice of like your craft every day. Get up and do it. You still do riyaz every day? Yeah, you will get good eventually. I feel like my voice has changed over the span of 5 to 6 years that I've been here, and practice is the only one that's helped me. Like I've gone back to it. Sometimes ho jata hai. We're all human, but I make sure that वो नहीं छूटे. जिस दिन वो छूट गया ना, और जिस दिन आपको ये लगने लगा कि यार मैं बस किंग हो गई हूँ, वो नहीं हो पाएगा. वो आगे आप फिर बढ़ ही नहीं पाओगे, और कंप्लेसेंट हो जाओगे, स्टैग्नेट हो जाओगे, और करियर खत्म हो जाएगा. Don't take anything for granted. Nothing at all. Because it goes by so fast. हाथ से चीजें इतनी जल्दी निकल जाएंगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा. You're commitment phobic in the movie, correct? Yeah. Of sorts. I'm not commitment phobic, yeah. I'm just, the Meera is not. It's not a commitment phobic girl that tries to run away from home. She's क्या लिख दिया है ये, किसने लिखा है? नहीं, तो ये नहीं है. कर दो उनको भी. हाँ, मैं करेक्ट करती हूँ. ये वो नहीं है. It's about you know, sometimes we think in a society it's okay to not ask a woman what she really wants in life. All the It's time. about that. Exactly. So that's exactly what I'm saying, and that's what she's about. She's like, bro, I want to live my life freely, and मेरे को अगर शादी करना है तो मैं करूँगी, और जिससे करना है उससे करूँगी ना. आप मेरे को पूछो तो सही, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? कैरेक्टर में आ गया. हाँ, तो भाग गई वो. It's just that. इंटरेस्टिंग. बट रिलेशनशिप्स के बारे में मुझे बात करनी थी इसी टॉपिक को लेके. व्हाट इज योर व्यू इन द थिंग्स दैट यू सी इन situationships and relationships and commitment phobia, not in the movie but in general? सोचा इसके बारे में कभी? I'm not commitment phobic at all. I in fact believe in having one partner that you sort of live the rest of your life with, because I've seen my parents do it, and they have periodically been very accepting of each other and made sure. So there's something very beautiful about it. It's a friendship. At the end of the day, I feel like love really disappears, and what is left of it is friendship. Pyar dosti hai. It's true. And I've seen them that in my parents, and today also they like each other, dude, and that's very important with who you are. And agar hum
constantly move करते रहेंगे from one person to another, I don't think that really happens. You don't find that deep sense of attachment which you'd only have with your parents then. And when they're gone, who else do you have it with? There has to be one person in the world, at least. इसको लेके कि वी आर नॉट सीरियस अबाउट कमिटमेंट एंड ऑल दिस, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप बट वर्क, हर जगह हमें बहुत यू नो इन लाइक दैट एटीट्यूड ऑफ लेटिंग गो वेरी इजीली और नॉट अटैचिंग इजीली. It's in a way it's a good thing also, bro, because I feel like there's so much pressure and I feel like unnecessary pressure नहीं लेना चाहते हम क्यों लें. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं खुश नहीं हूँ कोई सिचुएशन में तो मैं नहीं रहूँगी ना. एंड एज अ जनरेशन इफ दे आर एक्सेप्टिंग दैट आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, बट एट वन पॉइंट आई डोंट अग्री इज दैट एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए. टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मत रहो बट थोड़ा सा अपने आप को संभाल के इन अ रिलेशनशिप. आई थिंक बेनिफिट ऑफ डाउट लिटिल बिट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सबके साथ झगड़ा नहीं कर सकते ना. मेरा भी I come from the same this that if I'm not happy in a thing, I'll have a spat and But I'm when just do like you out. लग गए कि थोड़ा सा भी कुछ होता है अरे यार नहीं करना, वो थोड़ा गलत हो जाता है यार. गलत हो जाता है ऑन द पार्ट ऑफ खुद के लिए ही ना. सेंटर क्या है? व्हाट डू यू मीन सेंटर क्या है? सेंटर नहीं बचता ना फिर कोई. एक तुम्हारी जगह कहाँ है फिर? Where will you go in? Because at the end of the day, it's a society. It's आप. I feel like that is something that and correct me if you think it's not right what I'm saying, but I genuinely feel like if I keep moving on from one person to another, my energy will get displaced because I'm interacting with, for example, I'm dating you. We dated for 6 months. Then I realized, oh no, one wrong thing you said. Ick. Bye. So then I'll go move on to the other person. He also said something. Then I'll move on to the other. My energy keeps shifting. It keeps changing. And that's not good. फिर मैं अपना actually जो life में focus करना है वो कैसे करूँगी? कुछ तो sort होना चाहिए ना. कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि यार ये है ना, ये मेरी life में रहेगा. मेरे माँ बाप रहेंगे, ये मेरी लाइफ में रहेगा. अब मैं लड़ती हूँ दुनिया से. हाँ, अब मैं अपनी लाइफ उठाती हूँ यहाँ से. अब मैं जो मैं लाइफ में करना चाहती हूँ वो मैं करूँगी. मैं इस पे भी फोकस करूँगी क्योंकि मेरे को इन लोगों से प्यार है. पर अगर मैं इनको थोड़ा सा कम वक्त दूंगी ना तो दिल बी ओके विद इट. दैट्स माई सेंटर इज व्हाट आई मीन. एंड आई फील लाइक एज अ जनरेशन दैट वी समहाउ लैक. No, I think very well explained. I agree with you 100%, and I think I also come from similar thought. तो बेस बोलता था कि आपकी ये जब sorted है, you are not scared in life to fail. Absolutely not. Because you agree with that. But मेरी बहन भी नहीं है यार. थोड़ा सा है पर इतना नहीं है. She'll make sure she's just emotionally like very tight with us. And तभी नहीं है ना. उसकी दोस्त भी अभी तक सेम ही है यार. तो मैं आपको बताता हूँ पैटर्न क्या होता है ना. स्कूल के शायद तब होता होगा. तब वो आता है तब भी होता है. ये दो मोस्ट कॉमन है. एंड इफ दे आर नॉट टाइट विद देयर पेरेंट्स देन इट्स वेरी इजी फॉर दैट टू ब्रेक. देन यू आर लाइक चॉइसेस, options, and in that also like मेरा तो कोई नहीं है. And that vibe comes with the Gen Z people a lot when you shift or you're not close. वो वाली प्रॉब्लम हो जाता है with our generation. And before our generation like वो अपने खाने का सोच रहे हैं. Exactly. ये सब का कहाँ सोचेंगे. So और यार source has to be very strong. Like we're talking, I think इसका एक ही आंसर है. Just be attached with people that raised you. But again, then there are a lot of people that are really not good parents. Of course. Yeah. So I don't speak for them, but I cannot speak for them because touchwood I've been in a different place of life and I've really had amazing parents that raised me well and are constantly there for me. But that has to be again very strong for people to not be how they are. I don't think it's a Gen Z thing or a millennial thing. It's a very मेरा अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ट्रू माय बैड नहीं होता यार. ट्रू वो बहुत डिफिकल्ट लाइफ मैन्यूवर करना डिफिकल्ट होता है. What is next for you? Next for me is I'm doing shows now and going to release singles. What do you look forward to? Yeah, just everyday music. Yeah, that's what I look forward to. तो ऐसे कुछ है. Where do you get your anxiety from?
एंग्जाइटी फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ गोल्स कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, गिल्ट वाला? रोज का भाई रोज का फोन घुमाओ, बोला ये नहीं हुआ. फॉर एग्जाम्पल अभी तक हमारा इंट्रो रेडी नहीं हुआ किसका? शो का. हाँ. तो 36 फोन लगाए वेट कर रहे हैं कब आएगा, कब देखेंगे, अप्रूव करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है यार. एक आर्टिस्ट के लिए ना जान जलती है अगर फॉर एग्जांपल मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ जो मुझे प्रोवाइड करना है. तो अगर मुझे वो लाइट नहीं मिल रही है जो मुझे चाहिए तो मेरी जान जलती है. सो पीपल हु हैव अ विजन इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे वांट टू शो टू द पब्लिक. और मुझे ऐसे लोकली ऐसे जाके वनीला शो करके नहीं आना है. आई वांट देम टू sort of Have the best come time. there and have a good time, yeah. But the problem comes where you don't get the kind of inventory you want, and it happens to a lot of Indian artists. Like you make anyone sit here, they'll tell you. Give away to the audience. I just thought I'd know Ayush Shukla more, but I don't think I did because he asked me a lot of questions that I'm sad about. But otherwise, I feel it was a great chat and mostly ulti. Yeah, and at one point if I've gotten angry or like frustrated about a certain thing, forgive me. I didn't see that. I'll look for it now. But thank you. No, Rani, I'm for kidding. doing this. It was a lot of fun, and I hope to come back and chat with you soon, and maybe that'll be your podcast. I love ulting also. Don't worry Yeah, about it. please I do. control myself a lot. Part 2. मुझे नहीं Wait for बोलना है. part 2. All right. Thanks, Thanks, Rani. man.